बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम न्यूक्लियर फेज के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। एक का नाम है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और दूसरी का नाम है मीन लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स। और इन दोनों टॉपिक के साथ जो शॉर्टकट रिलेटेड है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इन दोनों टॉपिक का क्विक रिव्यू लेंगे और फिर उसी क्विक रिव्यू के बेस पर जो है MCQs को सॉल्व करेंगे। So what is half-life? So half-life simply defined as the time interval in which the mass of a radioactive substance or the number of its atoms or nuclei reduces to half of its initial value is called half-life of that substance. इस definition को हम इस डायग्राम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास जो है कोबाल्ट 60 इनिशियली प्रेजेंट है और इसका मास है 10 ग्राम। 10 ग्राम और 10 ग्राम मीन 100%, करेक्ट। अगर इस कोबाल्ट 60 पर 5.2 साल गुजर जाए तो ये कोबाल्ट 60 के जो 10 ग्राम है, अगर आप इसको इतने अरसा बाद देखें तो 5 ग्राम कोबाल्ट जो है वो बाकी रहेंगे और इसके 5 ग्राम कोबाल्ट जो है वो किसी दूसरी न्यूक्लियाई में बाय बीटा और गामा एमिशन कन्वर्ट होंगे। तो इसका कितना हिस्सा बाकी रहेंगे? हमारे पास 50% और हाफ बाकी रहेगा। नाउ द टाइम टेक बाय दिस 10 ग्राम कोबाल्ट टू रिड्यूस टू 5 ग्राम कोबाल्ट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। इस तरह हमारे पास 5 ग्राम कोबाल्ट मौजूद है इनिशियली, मिसाल के तौर पर 50% है। इस पर अगेन अगर इतना अरसा गुजर जाए तो ये 2.5 ग्राम कोबाल्ट जो है बाकी रहेगा और इसके 2.5 ग्राम किसी दूसरी मटेरियल में कन्वर्ट होंगे, करेक्ट। सो द टाइम टेक बाय दिस कोबाल्ट 60 फ्रॉम 5 ग्राम टू 2.5 ग्राम टू रिड्यूस फ्रॉम 5 ग्राम टू 2.5 ग्राम इज कॉल्ड हाफ लाइफ ऑफ कोबाल्ट। इस तरह ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा और इसकी जो 10 ग्राम है उसमें एक एक्सपोनेंशियली डिके आएगा। नाउ हाफ लाइफ, अगर आपने हाफ लाइफ को समझना है और उनके बेस पर MCQs को सॉल्व करना है तो आपने इस टेबल को जो है अंडरस्टैंड करना है। ये टेबल हमें 4 कॉलम शो करता है। द फर्स्ट वन इज टाइम या नंबर ऑफ हाफ लाइफ, द सेकंड वन इज remaining fraction of radioactive material which is denoted by n/n0 or n/n0 equal to 1/2 power n, and this n means number of half life, and the decay fraction equal to 1/-n/n0 or 1 minus 1/2 power n, and the fourth column shows the remaining fraction plus decay fraction equal to 1 means the total number will be conserved. सिमिलरली हमारे पास कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल है, इसका इनिशियली हमारे पास जो है अमाउंट है 1 मीन्स 1 इक्वल टू 1/2 पावर 0 और इक्वल टू 100%। मीन इनिशियली हमारे पास जो है कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल है वो प्रेजेंट है 100% है या 1 है इसका अमाउंट। सो इसका जो है आफ्टर 1 टाइम पीरियड, आफ्टर 1 हाफ लाइफ, अगर हम इसी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई को 1 हाफ लाइफ बाद दे के मीन T इक्वल टू 1 हाफ लाइफ, तो हमारे पास ये बाकी रहेगा, इसका कितना फ्रैक्शन बाकी रहेगा? 1/2 मीन 1/2 इक्वल टू 1/2 पावर 1 और 1/2 पावर मीन 50%। और इसका कितना फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास डिके होगा। यहाँ पर n/n0 की जगह हमने पुट करना है 1/2, सो 1/2 इक्वल टू 50%। सो इट मीन्स आफ्टर 1 हाफ लाइफ जो है हमारे पास कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल हो तो उसका 50% बाकी रहेगा और 50% जो है किसी दूसरे में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हम इन दोनों को ऐड करें सो वी ऑब्टेन 1 मीन द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विल बी कंजर्व्ड। न्यूक्लियाई कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म बट द टोटल अमाउंट विल बी कंजर्व्ड। इस तरह हमारे पास अगर कोई भी रेडियोएक्टिव मटेरियल है उस पर 2 हाफ लाइफ गुजर जाए 2, तो अगेंस्ट को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना फ्रैक्शन बाकी रहेगा? 1/4 इक्वल टू 1/2 पावर 2 एंड दिस 2 मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ और इक्वल टू 25%। और कितना डिके जो है कितना डिकेड फ्रैक्शन होगा हमारे पास? 3/4। यहाँ पर n/n0 की जगह हमने पुट करना है 1/4 और 75%। सो इट मीन्स आफ्टर 2 हाफ लाइफ हमारे पास जो डिके फ्रैक्शन होगा वो 3/4 होगा और 75%, और हमारे पास जो रिमेनिंग फ्रैक्शन होगा ओवर होगा 1/4 और इक्वल टू 25%। इस अगर किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल पर 3 हाफ लाइफ गुजर जाए तो इसको अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग फ्रैक्शन विल बी 1/8 और 1/8 इक्वल टू 1/2 पावर 3 एंड दिस 3 शो नंबर ऑफ हाफ लाइफ और इक्वल टू 12.5%, और डिके फ्रैक्शन हमारे पास होगा 7/8 और इक्वल टू 87.5%। इस तरह अगर किसी भी रेडियोएक्टिव मटेरियल पर n हाफ लाइफ गुजर जाए सो द टोटल टाइम इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ multiplied by half life equal to 1/2 power n, and this 1/2 power n show remaining fraction and the decay fraction will be 1 minus 1/2 power n. Again अगर इन दोनों को हम ऐड करें so we obtain 1 or equal to 100%, so it means the remaining fraction plus decay fraction must be equal to 1. Now some formula for
number of half-lives, some formula for number of atoms left behind after n half-lives. Remember, let n naught be the number of atoms or nuclei of a radioactive substance in the beginning. After time t equal to 1 half-life, the number of atoms left will be n naught by 2. इसको हमने 2 से डिवाइड करना है. Similarly, after 2 half-life, अगर इस मटेरियल पर n naught पर 2 half-life गुजर जाए, so after 2 half-life हमारे पास कितना फ्रैक्शन बाकी रहेगा 1/2 n naught by 2 और n naught into 1/2 power 2. इस तरह after 3 half-life, the number of atoms left will be 1/2 n naught 1/2 power 2 or n naught 1/2 power 3. Similarly, after n half-lives, t equal to n means number of half-life and t half means half-life. The number of atoms left will be n equal to n naught 1/2 power n. यहाँ पर हमारे पास जो है, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर हमारे पास पावर 2 है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, और अगर n half-life गुजर जाए सो the remaining particle n equal to n naught 1/2 power n. इस तरह अगर n को हमने यहाँ पर से कैलकुलेट करें n equal to t over t half, so the number of remaining particle n equal to n naught 1/2 power t divided by half-life. So these two are important formula which will be help in solving MCQs about half-life. Average or mean life of radioactive elements. The reciprocal of disintegration constant is called mean life of element or atom or nucleus. So mean life denoted by tau equal to 1 over lambda means greater disintegration constant, smaller will be mean life, or simply means the mean life or average life equal to 1 over lambda or the reciprocal of disintegration constant. So the average life of radioactive element and the reciprocal of decay constant. But we know that half-life equal to 0.693 divided by lambda, or t half equal to 0.693 multiplied by 1 over lambda, or t half equal to 0.693 1 over lambda mean life tau, or tau equal to 1.44 multiplied by t half. It means mean life of radioactive material equal to 1.44 multiplied by half-life of that radioactive material. Now this shows some important isotope and it is corresponding half-life. MCQ number 1. Let assume X is a radioactive sample. After some time, fraction 7/8 of its decay, the undecayed particle will be what? 75%, 20%, 25%, 12.5%. हमारे पास एक रेडियोएक्टिव सैंपल है X और इसका कितना फ्रैक्शन डिके हुआ है 7/8. दिस वन, दिस इज 7/8. दिस फ्रैक्शन जो है हमारे पास डिके हुआ है या 87.5% हमारे पास डिके हुआ है, तो कितना बाकी रहेगा हमारे पास 12.5% और द फ्रैक्शन विल बी 1/8. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. MCQ number 2. A sample of radon initially placed in a box. After some time the box opened and it is observed that the remaining fraction of radon is 1/16 to its initial amount. The decay fraction will be what? So we know from the previous table that decay fraction plus undecay fraction equal to 1. So यहाँ पर decay fraction equal to 1 minus undecay fraction. 1 minus undecay fraction 1/16. By solving this we obtain 15/16. So the decay fraction is 15/16. MCQ number 3. Starting with sample of favor copper 66, 7/8 of its decay into zinc in 15 minutes. The corresponding half-life will be 8. 7/8 fraction decay, this one. This is 7/8 fraction decay, which corresponding number of half-life is 3. Correct? So remaining fraction equal to 1/8. 7/8 हमारे पास decay हुआ है और हमारे पास जो remaining fraction है 1/8. So 1/8 equal to 1/2 power 3 and 3 show number of half-life. From here also n equal to 3. So mean number of half-life equal to 3. So t equal to n, it means the number of half-life is 3. So anytime t equal to number of half-life multiplied by half-life. So putting the value of t and t half, and this t and this number of half-life, so we obtain t half 5 minutes. MCQ number 4. The half-life period and the mean life of radioactive element are denoted respectively by th and t means, t half and t means. What will be the correct relation? So we know that mean life equal to 1.44 multiplied by t half, or it means mean life is greater than half life. So the correct option is option C. MCQ number 5. What fraction of a radioactive material will get disintegrated in a period of 2 half-lives? So disintegrated fraction equal to 1 minus n over n naught, or 1 minus 1/2 power n, and this n show number of half-life. But here the number of half-life is 2. So by solving this we obtain 3/4.
So disintegrating friction after 2 half-life will be 3/4. MCQ number 6. Half-life of radioactive element depend upon which? Half-life and mean life of a substance doesn't change with time, pressure, temperature. Half-life only depend upon the nature of the element. So correct option is option D. MCQ number 7. Let assume X as a radioactive sample. After some time, fraction 7/8 of its decay and the undecayed particle will be what? So we know that this 7/8 means decay fraction. So undecayed fraction will be 1/8. So the correct option is option C. MCQ number 8. Two radioactive isotopes P and Q have half-life 10 minutes and 15 minutes respectively. Freshly prepared sample of each isotope initially contain the same number of atoms as one another. After 30 minutes, the ratio will be what? The number of atoms of P to the number of atoms of Q. So we know that for P number of half-life is 3 because we know that n equal to any time t divided by t half. So any time t means 30 minutes, t half means 10 minutes, so n equal to 3. So for Q, the number of half-life n equal to 2, 30 divided by 15, this one. So the fraction of decay of P, that is 1/2 power 3, 1/8, and the fraction of undecay Q is 1/2 power 2, that is 1/4. Undecay fraction after 3 half-life is 1/8 and undecay fraction of per Q after 2 half-life is 1/4. So यहाँ पर हमने P Q की वैल्यू को पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, 0.5 will be the correct answer. MCQ number 9. A certain radioactive element have half-life 4 days. The fraction of material that decay in 2 days will be what? So this 2 days means T small t and this 4 means T half. So undecay fraction after n half-life that equal to n over naught equal to 1/2 power n. यहाँ पर हमने n को मालूम करना है, n T divided by T half 1/2. So fraction of undecay means 1 minus fraction of decay. So 1 as it is रहेगा हमारे पास और फ्रैक्शन डिके क्या होगा? n over naught की जगह हम पुट करेंगे 1/2 power 1/2. करेक्ट. So 1 minus 1/2 power n, 1 minus 1/2 square root. By taking LCM and simplify, we obtain this one. Correct option is option D. MCQ number 10. What amount of original radioactive atom is left after 5 half-lives? So undecay fraction after n half-life equal to n over naught equal to 1/2 power n. हमारे पास जनरल इक्वेशन है फ्रैक्शन रिमेन आफ्टर n half-life. यहाँ n की जगह हमने पुट करना है 5. So we obtain the fraction remain n over naught equal to 1/32. 100 से multiply divide करना है, so 3%. The correct option is option A. MCQ number 11. A sample contains 16 gram of radioactive material, the half-life of which is 2 days. This is T half. After 32 days, this small t. The amount of radioactive material left in the sample will be what? So m over m naught equal to 1/2 power n. This is remaining fraction in terms of mass. m equal to m naught 1/2 power n. हमने m naught की वैल्यू को पुट करना है, n को मालूम करना है, n equal to 32/2 equal to 10. यहाँ पर m naught की जगह पुट करेंगे 16 ग्राम, n की जगह पुट करेंगे 16. By simplify this, we obtain 1 gram divided by 2 power 12, which is less than 1 milligram. So the correct option is option A. MCQ number 12. A sample contains 10 milligram of radioactive material, half-life 270 days. This is T half. After 540 days, this is small t. The mass of radioactive material left will be what? m over m naught remaining fraction in term of mass equal to 1/2 power n. यहाँ हमने n को मालूम करना है और फिर n की वैल्यू को पुट करना है. So by putting the value of naught and n, we obtain 2.5 milligram. Correct option is B. MCQ number 13. If n naught is the original mass of the substance of half-life equal to this one, then the amount of substance after this here, this is small t and this is capital T. So as remaining amount is n over n naught equal to 1/2 power n, और remaining number of particle equal to n equal to n naught 1/2 power n. यहाँ पर m को हमने मालूम करना है, which is 3. So n equal to n naught by 8. MCQ number 14. A newly prepared radioactive nuclei have decay constant, this one. What is the approximate half-life? So we know that half-life equal to 0.693 divided by lambda. यहाँ पर lambda की वैल्यू को हमने पुट करना है ये. So we obtain 0.693 10 power 6 second. अब सेकंड की जगह हमने पुट करना है 1 hour divided by 3600. So we obtain this one. फिर hour की जगह हमने पुट करना है 1 day divided by 24. So we obtain this one. फिर day की जगह हमने पुट करना है 1 week divided by 7. So we obtain this one. So the correct option is option A.
MCQs 15. The half-life of certain radioactive isotope is this one. This is T half. What fraction of the sample would remain after 16 years? This is small t. So the fraction remain after n half-life n over n naught equal to 1 over 2 power n. यहाँ पर n की जगह हमने put करना है 1 by 2. So by simplify this we obtain 0.707. So the remaining fraction will be equal to 0.707. Correct option is option B. MCQ number 15. The half-life of tritium is 12.5 years. This is T half. What mass of tritium of initial mass, this is M0 64 milligram, will remain undecayed after 50 years. This is small t. 50 years means small t. So as undecayed fraction in term of mass m over M0 equal to 1 over 2 power n, or m equal to M0 1 over 2 power n. Here M0 equal to 64 milligram, n is equal to 4. So 1 over 2 power 4. By simplify this we obtain 4 milligram. So the correct option is option B. MCQ number 17. A radioactive substance have half-life 4 months. 3/4 of the substance will decay in how much time? So 3/4 this one. This 3/4 substance will be decay and how much number of half-life? 2 half-life. So यहाँ पर हम 2 put करेंगे. T half की जगह हम put करेंगे 4 months. We obtain T equal to 8 months. MCQ number 18. A radioactive substance have half-life 3 years. 12.5% substance remain after how much time? 6 year, 9 year, 2 years. We know that 12.5% will remain after 3 half-life. So 3 multiplied by half-life. Half-life is what? 3 years. So 3 multiplied by 3 equal to 9 years. So the correct option is option B. MCQ number 19. The ratio of half-life times of two element A and B is T over TB. The ratio of the respective decay constant lambda A over lambda B will be what? हमने lambda A और lambda B को मालूम करना है. We know that half-life of A element T equal to 0.693 divided by disintegration constant of A, and half-life of B element equal to 0.693 divided by disintegration constant of B. So यहाँ पर 2 को हमने 1 से divide करना है. So lambda A, lambda B equal to TB by TA. So the correct option is option A. MCQ number 20. The half-life of radioactive substance is 40 days. This is T half. The substance will disintegrate it completely and how much time? We know that from Sodhi and the report, law of disintegration, number of particles remain n equal to n naught e power minus lambda t. अगर t की जगह हम infinity put करें, so we obtain n equal to 0. Something divided by infinity equal to 0. So it means हमारे पास कोई भी radioactive material है, उसका half life 40 days है, और हमने इंटरेस्टेड है कि इसके सारे जो न्यूक्लियाई है किसी दूसरे में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए टाइम रिक्वायर्ड होगा इन्फिनिटी. MCQ number 21. A radioactive substance contain 10,000 nuclei and half life equal to 20 days. This is T half. The number of nuclei present at the end of 10 days and this small t. So remaining fraction n over n naught equal to 1 over 2 power n. In की जगह हमने put करना है 1 by 2. So we obtain 70. So this will be the remaining particle of this 10,000 nuclei after 10 days. MCQ number 22. The half-life of radon is 3.8 days. This is T half. If the initial mass of the radon is 150 milligram, this is M0. Then the remaining mass undecay after 38 days is small t. So remaining mass m equal to M0 1 over 2 power n. यहाँ M0 की वैल्यू पुट करें, n की वैल्यू को पुट करें, यहाँ से मालूम करें, so we obtain 0.15 milligram. So the correct option is option C. MCQ number 23. The average life or tau and the decay constant lambda of radioactive substance related, as we know that mean life equal to reciprocal of disintegration constant. So tau equal to 1 over lambda or simple tau multiplied by lambda equal to 1. So the correct option is option A. MCQ number 24. A sample of radioactive substance has this number of nuclei. At half-life is 20 seconds. This is T half. The number of nuclei that will left after 10 seconds, this is small t. Approximate will be what? So T equal to nt half or n equal to half. So the remaining particle n equal to initial amount 1 over 2 power n. n mean number of half life. So 10 power 6 और यहाँ n की जगह हम पुट करेंगे 1 by 2. So उसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 10 power 6 1 over square root 2 and 1 over square root 2.707 multiplied by this we obtain 7 10 power 5. So the correct option is option C. MCQ number 25. Plutonium decay with half life this one. 24,000 साल जो है प्लूटोनियम का हाफ लाइफ है T half. If plutonium is stored for this time is small t, then
the fraction of that will remain how much? N over N naught, this is remaining fraction of plutonium after N half-life, 1 over 2 power N, where N equal to 3. So N over N naught equal to 1 over 8. So the remaining fraction of plutonium after 7200 years will be 1 over 8. Thank you, dear.